गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये आपके फ्यूचर भी इस पे बहुत डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी का। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस पे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी जो है वो लॉन्च किया है। तो उन्होंने बोला है कि अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में, अगर वो वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है? पूरा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी कवर हो जाता है और आपका स्टोरेज ऑफ गुड्स भी आता है। ठीक है, मतलब आपने एक जगह से आपने दूसरी जगह पे गुड्स पहुंचाने हैं, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, आपके लिए स्टोरेज भी लगेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है आपको आप लॉजिस्टिक्स कहते हो। तो लॉजिस्टिक्स का मेन मोटिव ये होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट मिनिमम कॉस्ट में हम कैसे पूरी कर सकते हैं। वो आपके लिए सबसे अच्छी लॉजिस्टिक्स की जो है वो चेन होती है। तो अब हमारे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जो है लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। आपको पता है ऑनलाइन बिजनेसेस कितने ज़्यादा आ चुके हैं। अगर हम सिर्फ इंडियन लॉजिस्टिक्स मार्केट को देखें तो $200 बिलियन की ये मार्केट है और लगभग 22 मिलियन पीपल को जो है लाइवलीहुड देती है। अब लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो बहुत हाई है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें जहाँ पर 8% जो है कॉस्ट पड़ती है जीडीपी के हिसाब से लॉजिस्टिक्स की, इंडिया में वो कॉस्ट 14% पड़ती है। उसको कम करने की ज़रूरत है। तो ऑफ कोर्स यही उसी के लिए हमने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी निकाली है कि हम सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स जो है अक्रॉस इंडिया लेकर आएंगे। अपने वेयर हाउसिंग सेक्टर को हमने स्ट्रेंथन करना है। फिर एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम हम कंट्री में बनाना चाहते हैं जिसमें हमारी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों जो है वो कवर हो जाएंगी। तो हम अपनी स्टोरेज के ऊपर फोकस देने के लिए वेयर हाउसिंग सेक्टर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम ऐसा बना रहे हैं, स्मूथ बना रहे हैं, ताकि हमारी सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री हो सके। सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, प्राइवेट प्लेयर्स, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स, उन सबको भी इन्वॉल्व किया जाएगा कि कैसे जो है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए, कैसे जो है गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम उसको सीमलेस फ्लो दे सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इसके अलावा भी बहुत से, इस पॉलिसी के अलावा भी गवर्नमेंट ने जो है एक्शंस लिए हैं। जैसे पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिससे गवर्नमेंट जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल कर रही है कंट्री का। ठीक है, सो 35 न्यू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं। 30 एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज भी होंगी। तो ये सारा आपका जो है लॉजिस्टिक्स के लिए ही किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइल्ड वेलफेयर पैनल। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के जो रूल्स को भी नोटिफाई किया है, उसमें ये भी कहा गया है, अभी हमने पढ़ा था ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर दे दी गई है इंस्टेड ऑफ कोर्ट्स फॉर चाइल्ड अडॉप्शन। तो उसके अंदर एक और भी है आपका प्रोविजन जो कि चेंज किया गया है, जो है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं उसमें कोई भी मेंबर जो है वो फॉरेन फंड्स नहीं ले सकता। ठीक है, जो भी आपके चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ में जो मेंबर्स होंगे, क्योंकि उनके पास मैजिस्ट्रेट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितनी पावर होती हैं, तो वो फॉरेन एफसीआरए के अंदर जो है, एफसीआरए प्रोविजंस के अंदर वो फॉरेन फंड्स नहीं ले सकते। लेकिन इसमें प्रोविजन ये भी डाल दिया गया है कि उनके कोई फैमिली मेंबर या क्लोज रिलेशन के जो लोग हैं वो भी एनजीओ के लिए काम नहीं करते होने चाहिए, या वो भी फॉरेन फंड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो फैमिली मेंबर या क्लोज रिलेशन जो वर्ड है बहुत ब्रॉडली वर्डेड है, आप किसी को भी कह सकते हो कि ये इनके क्लोज रिलेटिव है। ठीक है, फिर इससे जो है कोई ना कोई पर्सन जो है, कोई ना कोई फैमिली में मेंबर या कोई क्लोज रिलेशन में पर्सन जो है वो हो सकता है किसी ना किसी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हो। तो इसकी वजह से जो है आप बहुत सारे जो है लोगों को आप इनएलिजिबल कर दोगे सीडब्ल्यूसी की अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो ये इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है? आपके ऑफ कोर्स एक तो ट्रायल्स जो होते हैं, जैसे आपको पता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसमें 4 तरह के क्राइम्स जो है वो आई एम सॉरी 3 तरह के क्राइम्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। हेनस क्राइम्स जिनमें 7 साल की मिनिमम या फिर उससे ज़्यादा की पनिशमेंट है। सीरियस क्राइम्स जिसमें 3 से 7 साल की पनिशमेंट होती है। और पैटी ऑफेंसेस जो आपके बाकी बचते हैं। तो अगर कोई हेनस क्राइम करता है कोई जुवेनाइल, तो उसको एडल्ट की तरह ही ट्राई किया जाएगा इन एडल्ट जस्टिस सिस्टम। बाकी जो आपके सीरियस और पैटी क्राइम्स होंगे उनमें जो है उनको जुवेनाइल जो है जो आपके जस्टिस सिस्टम के बेसिक के अकॉर्डिंगली उनको ट्राई किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो नेचर ऑफ क्राइम डिपेंड करेगा उससे, बट ये कौन डिसाइड करेगा कि ये हैनस क्राइम कंडक्ट किया है या सीरियस क्राइम कंडक्ट किया है इस पर्सन ने, या पैटी ऑफेंस कंडक्ट किया है। तो ऑफ कोर्स उसके लिए नेचर ऑफ क्राइम को जज करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया है।
अपार्ट फ्रॉम दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही अडॉप्शन के प्रोसीजर्स भी जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। जो है अडॉप्शन कैसे होगी ऑर्फन्स की, अबैंडन्ड की, सरेंडर्ड चिल्ड्रन की, उसके लिए कारा है आपकी ऑफ कोर्स, जिसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बना दिया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर दी गई है कि वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज बनाए, और वो जो है जिसमें एक चेयरपर्सन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट्स में या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की पावर्स को जो है वो एक्सरसाइज करेंगी। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 2021 में अभी अमेंडमेंट भी हमने किया है। अभी आपको क्यों किया अमेंडमेंट ये भी देख लेते हैं। क्योंकि एनसीपीसीआर ने देखा कि 7000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो कंट्री में थे, उनमें 1.5% तो बिल्कुल भी रूल्स को कंफर्म नहीं कर रहे थे, और 29% ऑफ देम में मेजर शॉर्टकमिंग्स थी। लेकिन एक भी जो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो था वो 100% कंप्लायंट नहीं था अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इसी के लिए अमेंडमेंट की गई, जिसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इंक्लूडिंग द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो है वो अडॉप्शन ऑर्डर दे सकते हैं। पहले ये ऑर्डर्स जो है कोर्ट के ही बेसिस पे मिलते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो है जल्दी से जल्दी अडॉप्शन का प्रोसेस को हम पूरा करने के लिए, फास्टर केस रेजोल्यूशन के लिए, जो है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, हम ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दे देते हैं। फिर जो है कोई भी न्यू सीसीआई जो है बिना आपके डीएम के सैंक्शन के जो है वो नहीं खुल सकता, स्टेट्स नहीं खोल सकती हैं ऑफ कोर्स, और डीएम ही जो है वो बैकग्राउंड चेक्स करेंगे जो आपके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स का, कि जो कि मोस्टली सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट होते हैं। अब उस बैकग्राउंड चेक में जो है ये प्रोविजन भी डाल दिया गया कि ये भी देखना पड़ेगा कि उनके कोई क्लोज रिलेटिव या फैमिली में कोई एनजीओ से रिलेटेड ना हो। ठीक है, सो अब जो है सीरियस ऑफेंसेस जो है उनमें एक और अमेंडमेंट की गई थी कि सीरियस ऑफेंसेस को बोला गया था कि मैक्सिमम पनिशमेंट चाहे 7 साल की हो, लेकिन मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स से कम हो तो उसको सीरियस ऑफेंसेस मानेंगे, जैसे हमने 3 से 7 साल का प्रोविजन देखा था। तो हिनस क्राइम्स और सीरियस क्राइम्स की डेफिनेशन जो है वो 2021 के अमेंडमेंट में ही आई है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, पॉलिटी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स जो है वो लिस्ट किए हैं बिफोर द रेलिवेंट बेंचेस, बिफोर द जजेस 29 अगस्त से। तो इस मूव को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 25 कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाए जाएंगे, तो जो है सुप्रीम कोर्ट वॉचर्स ने बहुत ही अपलॉड किया है, जो है वो कहा है कि बहुत अच्छा मूव है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यस, आर्टिकल 145 क्लॉज 3 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की ही बात हो रही है। ठीक है, तो इवन अगर कोई 3 जज का बेंच है, उसमें कोई कन्फ्लिक्टिंग वर्डिक्ट आ जाता है, तो उसको भी जो है मैटर जो है वो आपके 5 जज बेंच जो है वो हेयर कर सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के हिसाब से देखें, तो 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो है वो लगभग 15% ऑफ ऑल मैटर्स को हेयर करते थे, लेकिन अब वो कम होकर आंकड़ा 0.1% तक आ चुका है। तो बहुत सारे जो है 132 कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस उस टाइम पर जो है लगभग जजमेंट दे चुके थे, लेकिन आजकल तो सिर्फ गिनी चुनी जजमेंट्स आती हैं बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन द फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो अभी पेंडिंग पड़े हैं। अगर हम देखें 1950s के टाइम पर, तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का बहुत फेमस केस था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का पहला मैटर था जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का। लेकिन जो सबसे जो फेमस है वो तो आप सबको पता ही है, 1973 का केस अभिनंदा भारती वर्डिक्ट। ठीक है, सो क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की? क्योंकि अभी तक क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केसेस हैं आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 जज बेंच ही जो उसको सॉल्व करी जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अगेंस्ट है ये चीज़, तो है ना। तो इसलिए जुडिशियल स्क्रूटनी होना पार्लियामेंट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, CAG के ऊपर, उसके लिए 5 जजेस बेंच जो हैं वो ही सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेंगे। मेजर इश्यूज अभी हमारे पेंडिंग है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, EWS कोटा, सर्टिफिकेशन, हम कई लॉज की जो है मनी बिल्स को कह के हम जो है पास कर रहे हैं। ये सारे इश्यूज जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ही जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना ज़रूरी है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल लीव पटिशंस के अंदर बहुत ज़्यादा पटिशंस आ जाती हैं, तो वो ओवरलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो CGI को जो है वो डेलीगेट करना पड़ता है वर्क टू जज बेंचेस को। और इवन जब पैंडेमिक भी आई तो SC का जो रूटीन जो है आपका प्रोसीजर है या रूटीन जो काम है वो भी डिसरप्ट हुआ था।
सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइना ब्लॉक्स टेररिस्ट लिस्टिंग एट यूएनएससी। ऑफ कोर्स ये इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फॉर द थर्ड टाइम इन 3 मंथ्स चाइना ने एक इंडिया और यूएस के अटैम्प्ट को एक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को लिस्ट करने के लिए अंडर 1267 लिस्ट जो है उसको ब्लॉक कर दिया है। अब ये टेररिस्ट है लश्कर तैयबा के कमांडर साजिद मीर, जिसने 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स में जो है पार्टिसिपेट किया था। तो अब जो है सैंक्शंस रजीम क्या है आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन और रिस्टोर करे। तो उसके लिए ही आर्टिकल 41 ऑफ यूएन चार्टर कह रहा है कि सैंक्शंस आप का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपके पास बहुत सारे एनफोर्समेंट ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे इकोनॉमिक से लेके ट्रेड एम्बार्गोज लगा सकते हो उन लोगों के ऊपर, उनके फंड्स को फ्रीज कर सकते हो, ट्रैवल बैन्स लगा सकते हो। तो लगभग करंटली यूएनएससी में इस टाइम पर 14 एक्टिव सैंक्शन रजीम्स चल रहे हैं और हर सैंक्शन रजीम को मॉनिटर करने के लिए सैंक्शन कमेटीज बनाई जाती हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन द्वारा। तो ये सैंक्शंस कमेटी जो है ये आपके कौन बनाता है, जो आपके 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये कमेटीज बनाते हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन का काम जो है ये कमेटीज ही देखती हैं। ठीक है, तो जो 1267 कमेटी है जिसके अंदर इंडिया जो है पुश कर रहा था इसको टेररिस्ट लिस्ट करने के लिए इस पर्सन को, वो है आपकी एक्चुअली में यूएनएससी अल कायदा एंड आईसिल सैंक्शंस कमेटी। एक्चुअली में अल कायदा टेररिस्ट और आपके आईएस-आईएस के टेररिस्ट को लिस्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसी के अंदर जो है इंडिया पुश कर रहा था कि इन टेररिस्ट को भी डाल दिया जाए। ठीक है, सो जब ये सैंक्शंस कमेटी बना दी जाएगी, अगर लिस्ट हो जाए, तो उस पर्सन के ऊपर क्या होता है कि उसके फंड्स को फ्रीज करने के लिए कहा जाता है उस मेंबर स्टेट को जहां पर वो पर्सन लोकेटेड है, उसके फाइनेंशियल एसेट्स को जो है वो फ्रीज करने के लिए कहा जाता है, ट्रैवल बैन लगाने को कहा जाता है और आर्म्स और मटेरियल्स से उसको एक्सेस कट करने के लिए कहा जाता है। अब कैसे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कैसे सैंक्शंस लगाया जाता है, सैंक्शन कमेटी में डाला जाता है, तो सारे डिसीजंस जो है ऑफकोर्स आपके कंसेंसस से चलते हैं। 5 मेंबर्स के पास वीटो होती है, 10 मेंबर्स के पास जो है वीटो नहीं होती है, लेकिन जो है सारे जो है मेंबर्स जनरली कंसेंसस फॉलो करते हैं। इसमें सारे मेंबर्स जब एग्री करते हैं तो जो है तभी जो है किसी को पर्सन को टेररिस्ट के उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम, क्योंकि कंसेंसस से चलता है तो आप कह सकते हो कि सारे के सारे मेंबर्स के पास 15 के 15 मेंबर्स के पास जो है वो काइंड ऑफ अ वीटो होता है। ठीक है, सो मेंबर जो है लेकिन उसमें होल्ड पे भी डाल सकते हैं डिसीजन को। समझ लो जैसे चाइना ने क्या कहा है कि हमें और डिटेल्स की ज़रूरत है, हम सीधा इस पर्सन को इस लिस्ट में नहीं डाल सकते, हमें इसलिए हम इस डिसीजन को होल्ड पर डाल रहे हैं। एक बार अगर डिसीजन को होल्ड पर डाल दिया तो 6 महीने तक के लिए डाला जा सकता है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितनी मर्जी बार आप उस डिसीजन को होल्ड पे डाल सकते हो। क्योंकि ये मीटिंग्स क्लोज डोर्स में होती हैं तो इसीलिए ऑफ कोर्स इसका कोई भी एजेंडा या जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं या वोटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं इसके बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली 22nd मीटिंग ऑफ एससीओ जो है वो अटेंड किया है, उसमें सामरकंड डिक्लेरेशन भी जो है अनाउंस की गई है। ऑफ कोर्स एससीओ आपको पता ही है कि एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जून 2001 में बनाई गई थी। ये इसके मेंबर्स थे फाउंडिंग मेंबर्स और अब इंडिया भी इसका मेंबर है। इवन रिसेंटली ईरान को भी एक फुल मेंबर इसमें जो है वो बना लिया गया है, लेकिन 2023 में जब इंडिया होस्ट करेगा एससीओ की समिट तब ईरान एज अ फुल मेंबर ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, सो बिफोर 2021 अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर स्टेट थे, लेकिन अब जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट भी बढ़ के अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कतर हो चुके हैं। अब क्या डिसीजंस लिए गए हैं इस 22nd समिट में, तो एक तो कहा है कि इंटरकनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं हम आपस में एससीओ मेंबर स्टेट में और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बनाना चाहते हैं। ईरान को ऑफ कोर्स मेंबर स्टेट बनाया गया है, बेलारूस को भी इसमें मेंबर स्टेट बनाया गया है, आने वाले टाइम में बेलारूस भी एससीओ का फुल मेंबर हो जाएगा। और वाराणसी को टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2022-23 जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो 2021 की समिट में कहा गया था कि हर साल हम कोई भी एक जो है मेंबर स्टेट में से सिटी को एससीओ की टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल अनाउंस किया करेंगे। तो सबसे पहली जो सिटी है कल्चरल कैपिटल बनी है एससीओ की वो वाराणसी बनी है। और भी जो है आपके एरियाज़ पे कोऑपरेशन के लिए जो है वो कहा गया है, जैसे कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी, साइंटिफिक टेक्निकल कोऑपरेशन, इवन स्मार्ट एग्रीकल्चर और एग्रो इनोवेशन के ऊपर भी जो है वो कुछ फैसले लिए गए हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामरकंड। सो सामरकंड जो है यहाँ पर आपकी एससीओ की समिट हुई है, तो ये जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए। तो ये ज़रेफशान रिवर वैली में पड़ता है, साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ उज़्बेकिस्तान में। सामरकंड जो है वो उज़्बेकिस्तान की कल्चरल कैपिटल है, और वहाँ का वर्ल्ड के कल्चर का ये पिछले 2.5 मिलेनिया से ये पार्ट रहा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है, 1500 BC से इनहेबिटेड है ये सिटी। सेंट्रल पॉइंट ऑफ ट्रेड है, यहाँ से इजी राउट ऑफ एक्सेस मिल जाता है चाइना का और मेडिटेरेनियन एरियाज़ का। सामरकंड का मतलब है अ टाउन और फोर्ट ऑफ रॉक और स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी क्राफ्ट की प्रोडक्शन होती है, जैसे कि आपका जो कैसल, और यहाँ पे उसके लिए बहुत फेमस है, इनके डिफेंस के लिए भी बहुत फेमस है, ठीक है। सो पूरे उज़्बेकिस्तान की तरह यहाँ पर भी जो है सामरकंड में भी ऑफिशियल लैंग्वेज उज़्बेक ही है, ऑफ कोर्स। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वच्छ सुजल प्रदेश। आपके गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो है उन्होंने अंडमान एंड निकोबार को इंडिया के फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो घोषित कर दिया है। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में अब हर घर जल और ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस दोनों जो है सर्टिफिकेशन इनके पास आ चुकी हैं। So now let us see all these topics in English. So the first topic is national logistics policy. So this topic is important for our economy section. Very important topic because logistics is the future, if you can say. Okay, so that's why this topic is important. So PM Modi has recently unveiled the national logistics policy. So while launching this policy, he has underlined the need for having a strong support ecosystem if we want to our manufactured products to dominate the world market. So what is logistics? So logistics is the process of planning and execution and executing the efficient transportation and storage of goods from one point to another point. Okay, from the point of origin to the point of consumption. So goal of logistics is to meet customers' demand in a timely and cost-effective manner. You know that logistics is booming because of the internet revolution, and people are generally buying the goods from the comfort of their homes, and that's why even if we consider just the Indian market, Indian logistics market, it is estimated at over $200 billion. It also provides livelihood to more than 202 million people in India. So that's why it is very important to have a national level logistics policy. We are already having high cost logistics in India. If we compare it with developed countries, they are having just 8% in comparison to GDP, of course, logistics cost in their country. But in India, we have 14% because we lack the storage facilities and the requisite infrastructure for seamless flow of goods. So that's why the need for national logistics policy was felt, and we have launched this policy now. So the policy wants to ensure or facilitate a seamless flow of goods across the country. So there are two elements of any logistics process. One is, of course, the storage, and the second is transportation. So we have to focus upon these two components equally. So that's why we are going to focus upon our warehousing sector. We want to improve the quality of our storage infrastructure. We also want to increase the warehousing capacity in the country, and also ensure great synergy between several levels of government, including the central government, their departments, agencies, private players, and even the state governments, so that we can reduce the inflated logistics costs. And for that, the government is undertaking several other measures also, like the PM Gati Shakti Master Plan was announced, which aims to overhaul the entire infrastructure in the country. And for that, we are also creating 35 new multi-modal logistics parks in the country for promotion of exports. 40 air cargo terminals have been constructed. 30 airports have been provided with the cold storage facilities. So basic aim is to reduce the transportation and the storage cost, that is the logistics sector cost. So the next topic is child welfare panel. So this topic is important for your social issues. So you know that Juvenile Justice Amendment Act was recently notified, and the rules have been recently notified now. And from September 1, these rules have come into force. We've already discussed about it earlier also, but anyways, we are going to discuss about it in detail this time. So the recently amended rules are also talking about prohibiting any associated member of the child welfare committees from receiving foreign funds. So actually,
the chairperson of NCPCR has said that those who are on the child welfare committees, they have the power of a magistrate, or they are equivalent to government officials. So, like the government officials, they should also be they are also barred from FCRA. They are also barred under FCRA from receiving foreign funds. Not just that, but even if their family members or any close relative, if they are working with any NGO, then the person will be ineligible to be on CWC, because there would be conflict of interest, of course. So this is being criticized because people are saying that these family member, close relative, these terms are very broadly. These terms are very broad, so you can just have anyone disqualified from being a member of CWC, but by using these broad terms. So this will also reduce the pool of human resources available for CWC appointments. So, anyways, what is this Juvenile Justice Act? So, this act has two provisions. First is, of course, the crimes, like this Juvenile Justice Act was in news when the Nirbhaya case happened, when the one of the accused was a juvenile, but he committed a heinous crime. So, actually, he should have been tried as an adult, but because there was no law at that time, so government decided to amend that law. Now, the people or the individuals who are between the 16 to 18 years of age, and they have committed a heinous crime, they will be tried as adults in the adult justice system. So for that, we have to delineate the crimes. So first, of course, is the heinous crime. Heinous crime is any crime in which the minimum sentence is 7 years or maximum sentence is more than 7 years. Serious crime is any crime in which there is 3 to 7 years of imprisonment, and then all the rest of the cases are petty offenses. So for heinous crimes, any juvenile between the age of 16 to 18 years, if that person is committing a heinous crime, then he or she would be tried as an adult in the adult justice system. So who would decide that if the crime is heinous or not? Of course, Juvenile Justice Board is given the power to determine that. Also, the second provision related to Juvenile Justice Act is with respect to adoption. So CARA has been given a statutory body powers, and they will be streamlining the adoption procedures for orphans, abandoned and surrendered children. So even the state governments have been given the power to make child welfare committees in either each district or a group of districts to exercise powers under the act. So these committees are composed of a chairperson and 4 other members. So why this a new amendment has been made in 2021? Because it was realized by the NCPCR through several surveys that not even a single CCI was found to be 100% compliant of the provisions of Juvenile Justice Act. So that's why the amendments were made. Now, instead of courts, the district magistrates and even the additional district magistrates are empowered to issue adoption orders under the Juvenile Justice Act, so that we can have faster case resolution and accountability. Also, the DMs are empowered that they should be conducting the background checks of CWC members who are these CWC members are also reporting directly to the DMs regularly. With respect to serious offences, more broad definition has been given under the 2021 Amendment Act. So what is the serious offence? So any offence for which the maximum punishment is more than 7 years, and the minimum punishment is not prescribed or is less than 7 years, then that offense would be serious offense. So basically, for the first time, clear definition has been given between heinous and a serious crime, so as to protect more and more people more and more children out of the adult justice system. So the next topic is Constitution Bench. So this topic is important for your polity section. So recently, you know that the new Chief Justice of India has notified 25 Constitution benches, and the Supreme Court watchers are gladdened by this move. So you know that the Constitution Bench is stipulated under the Constitution of India as per the Article 145 Clause 3, which says that there should be minimum of 5 judges to decide or to sit for any case which involves a substantial question of law involving the interpretation of Constitution, which means it is the Constitution Bench. So even if there is a conflicting verdict between 3 judge benches, then also 5 judge benches are required to hear that matter. But there has been a consistent decline in Constitution Bench hearing cases. If we compare it with 1950s or 60s, all 15% of all matters in the
the constitution benches heard 15% of all the matters in early 1950s, but now that figure has declined to less than almost 0.1% in recent decades. So you know that there are certain cases mentioned here, like the very first constitution bench matter was AK Gopalan versus State of Madras case, in which the preventive detention law was upheld. The most famous, of course, you all know about it, the Kesavananda Bharti case of 1973. But there is a need to set up constitution benches because currently two and three judge benches are hearing the cases involving the constitutional law. Okay, so this is not a good thing. This is a wrong precedent. It is even a violative of the constitution. So there is a need to have judicial scrutiny over institutions like Parliament, EC, and CAG. So we also have many big issues pending before the court of law. Many constitutional issues are pending, like the electoral bond case, EWS quota case, and even some laws are being passed as money bills. But why we also have to understand the point of view of Supreme Court, why there is a challenge in having the constitution bench cases, because the top court is filled with unique special leave petitions, so it is already overburdened. You already know about the pendency of cases, so CJI has little options but to delegate the work to two judge benches. Also, the pandemic has recently disrupted the routine of the Supreme Court, so there is basically a frightening pendency of cases in the Supreme Court. So the next topic is China blocks terrorist listing in at UNSC. So for the third time in a row, Chinese have blocked a joint Indo-US attempt to put a Pakistani national, Sajid Mir, on the UN Security Council's 1267 list. So of course, this person was involved in 26/11 Mumbai terror attacks. So these sanctions of the UN Security Council are guided by the Chapter 4 of United Nations Charter, which says that under Article 41 of the UN Charter, sanctions can be used as measures to enforce or restore international peace and security. So certain measures like economic and trade embargoes, freezing of funds, and travel bans are used as enforcement tools to rein in the erring states. So these sanction regimes currently are, of course, currently the UNSC has 14 active sanctions regimes. These regimes are enacted via UN Security Council resolutions. So sanctions committees are formed so as to administer the sanctions enforced or the implementations of the sanctions, and these sanction committees basically oversee these 14 sanction regimes. So these sanctions committees are formed by the UN Security Council members, 5 permanent members and 10 non-permanent members. So one of these sanctions committees is the 1267 committee, which was originally made for Al-Qaeda and ISIL terrorists, but certain other terrorists like from Lashkar-e-Taiba have already found place in this committee also. So once a person is put under this list or sanction committee, then their funds, the member state in which the person is hiding, the member states are required to freeze the funds and financial assets of that individual, enforce a travel ban upon him or her, or cut off access to arms and related materials also. So how this committee, sanctions committee, or how any individual is put up in a sanctions committee? Of course, all decisions are taken by consensus. So it is basically or virtually providing a veto to all 15 members of the committee, and if any member is not willing to accept the person or the accused as a terrorist or for the sanctions, then that decision or that committee member can put the decision on hold for at least as long as 6 months at a time. So like China has done this, and there is no restriction on repeatedly invoking a hold on any decision, so which means it can be indefinitely put up on hold. So because these decisions are taken take place in closed sessions, so we do not even get to know about the actions or the deliberations that went behind the actions of China regarding this case.
So the next topic is Shanghai Cooperation Council, or I'm sorry, Shanghai Cooperation Organization. So recently, PM Modi has attended the 22nd meeting of SCO in Samarkand, Uzbekistan. So of course, SCO is that it is the Permanent Intergovernmental International Organization created in June 2001. Uh, Iran has recently in 2021 joined as a full member. Um, in 2021, Iran was an observer state, but now Iran has become a full member. In 2023, when India would be the chairman of SCO, Iran would join as the full member. Now, currently, SCO has 6 observer states, namely Afghanistan, Belarus, Mongolia, Saudi Arabia, Egypt, and Qatar. So, anyways, what are the decisions that have been taken in this 22nd meeting? So, the decision involves developing interconnectivity and efficient transport corridors among member states. Of course, a decision was also regarding the inclusion of new members like Iran, and even Belarus has also been admitted in the SCO. Varanasi has been declared as the tourist and cultural capital of Shanghai Cooperation Organization for the year 2022 and 23. So, that in 21 summit, it was decided that SCO tourism and cultural capitals will be announced, so that promotion in the field of culture and tourism can be done. So Varanasi has become the first cultural capital of SCO as of now. So other areas of cooperation have also been identified, like in renewable energy sources, scientific and technical cooperation, also cooperation in the field of smart agriculture and agro innovation. So the next topic is Samarkand. So Samarkand this topic is also important for international relations, because this city in Uzbekistan has hosted the 22nd summit of SCO. So that's why it becomes important for your prelims exam. So it is located in the Zarafshan River Valley of southeastern region of Uzbekistan. It is the cultural capital of Uzbekistan, and it has been an intrinsic part of the world culture for more than 2.5 millennia. So inhabitation in Samarkand started in almost 1500 BC, and that's why it is one of the oldest cities of Uzbekistan. It is the central point of trade for Central Asian region, as it provides easy route access to China and even the Mediterranean states. Samarkand, as per the Sogdian civilization, means a town or fort of rock or stone. Of course, Uzbek is the official language of Samarkand, because it is, of course, like other parts of Uzbekistan. And second official language is Russian. So the next topic is Swachh Sujal Pradesh. So this topic is important for your governance section. So recently, Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat has declared Andaman and Nicobar as the first Swachh Sujal Pradesh of India, which means that it has been certified as Har Ghar Jal certified and Open Defecation Free Plus certified state. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.